Welcome to English Literature with Aisha Noor, and today the topic of my discussion is The Tyger. The Tyger is a poem by William Blake. It was published in 1794. Today in this video we will discuss the general summary of the Tyger, line by line explanation, critical commentary on the Tyger, form and structure of this poem, and also the figure of speech used in this poem. Here is an interesting fact that William Blake in 1789 published a collection with the name Songs of Innocence. In Songs of Innocence, we have a poem named as The Lamb. And after few years, in 1794, he published Songs of Experience. First one was Songs of Innocence, and second one is Songs of Experience. In Songs of Experience, we have the poem The Tyger. First one contained the lamb, that is a symbol of innocence, and then in Songs of Experience, we have a poem The Tyger. So let's start with the text and line by line explanation of the text. I will explain the text in English and as well as in Hindi or Urdu. So let's begin. In the first stanza we have Tyger, Tyger burning bright in the forests of the night. What immortal hand or eye could frame the fearful spectre? Here the William Blake is questioning the creation of God, the Tyger. He says, what immortal being created this terrifying creature, which with its perfect proportions or the symmetry is an awesome killing machine? पहले स्टैंजा में विलियम ब्लेक ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि आखिर वो कौन सी क्रिएशन है, कौन से इमॉर्टल हैंड्स हैं जिन्होंने इस फेयरफुल क्रिएशन को बनाया है, यानी इस टाइगर को बनाया है, जिसका कलर ऐसा है कि वो अंधेरे में जंगल में जलती हुई आग की तरह लगता है। सेकंड स्टैंजा है इन व्हाट डिस्टेंट डीप्स और स्काइज बर्न द फायर ऑफ देन आइज. Deeps or skies are hell or heaven. Deeps are, as we know that hell is so deep. Deeps or skies burn the fire of their eyes. Tiger's eyes are so burning, they are like a fire. On what wings dare he aspire? What the hand dare seize the fire? In stanza 2, the poet is saying that was it created in hell? Distant deeps. लाइक क्वेश्चन कर रहे हैं विलियम ब्लेक कि क्या इसे हेल में बनाया गया, इन द डिस्टेंट डीप्स में बनाया गया, और इन हेवन, या फिर इसे जन्नत में हेवन में बनाया गया है. इफ़ द क्रिएटर हैड विंग्स, अगर क्रिएटर के पर हैं, जिस क्रिएटर ने इस टाइगर को बनाया है अगर उसके पर हैं, हाउ कुड ही गेट सो क्लोज टू द फायर इन विच द टाइगर वॉज क्रिएटेड? हाउ कुड ही वर्क विद सो ब्लेजिंग अ फायर? Next we have, and what shoulder and what art could twist the sinews of thy heart? And when thy heart began to beat, what dread hand and what dread feet? इसमें पोइट कहते हैं कि what strength, shoulders means the strength, and craftsmanship and art could make the tiger's heart. अब पोइट टाइगर के दिल की बात कर रहे हैं, हार्ट की बात कर रहे हैं कि आखिर इतना स्ट्रॉन्ग और इतना पावरफुल जो हार्ट बनाया है वो क्रिएटर खुद कितना स्ट्रॉन्ग होगा. स्टैंजा 4 की अगर एक्सप्लेनेशन देखें, व्हाट काइंड ऑफ टूल हैमर डिड ही यूज टू फैशन द टाइगर इन द फॉर्ज फायर? व्हाट अबाउट द चेन कनेक्टेड टू द पैडल विच द मेकर यूज टू पंप द बेलोज? पोइट क्वेश्चन कर रहे हैं कि हैमर किस तरह की यूज़ हुई होगी, कौन कौन से टूल यूज़ हुए होंगे, और आखिर कितनी उसको टेम्परेचर या हीट देनी पड़ी होगी फॉर द क्रिएशन ऑफ द टाइगर. नेक्स्ट स्टैंजा में पोइट कहते हैं, व्हेन द स्टार्स थ्रू डाउन देयर स्पेयर्स एंड वाटर्ड हेवन विद देयर टेयर्स. इसका मतलब है कि व्हेन द स्टार्स कास्ट देयर लाइट ऑन द न्यू बीइंग, लाइक जब टाइगर बन गया तो उसके बाद जब स्टार्स की रोशनी पड़ी टाइगर पर, डिड ही स्माइल हिज वर्क टू सी? जिस गॉड ने, जिस क्रिएटर ने टाइगर को बनाया, उसे बनाने के बाद जब सितारों की रोशनी उस क्रिएशन पर पड़ी तो क्या क्रिएटर मुस्कुराया होगा? डिड ही स्माइल? क्या उसे खुशी हुई होगी अपनी क्रिएशन देख के कि उसने इतनी प्यारी एक फैसिनेटिंग चीज़ बना ली है? डिड ही हु मेड द लैम्प मेक दी? क्या वही क्रिएटर है जिसने लैम्प को बनाया? लैम्प इनोसेंस की अलामत होता है. इज़ सो क्यूट एंड
उससे किसी को कोई ख़तरा नहीं होता। इट इज़ नॉट लाइक बर्निंग ब्राइट जिस तरह टाइगर है। टाइगर एंड लैम्प आर सो अपोजिट टू ईच अदर। तो पोएट क्वेश्चन कर रहे हैं, डिड ही हु मेक द लैम्प, क्या ये वही क्रिएटर है जिसने लैम्प को बनाया और अब उसी ने टाइगर को बनाया। और जो लास्ट स्टैंजा है हमारे पास इज़ जस्ट लाइक द फर्स्ट स्टैंजा, लेकिन सिर्फ एक लफ्ज़ का फ़र्क है। पहले स्टैंजा की चौथी लाइन में हमारे पास है, कुड फ्रेम दाई फेयरफुल स्मिट्रे। कुड इज़ फॉर क्वेश्चनिंग, लाइक एनीवन कैन प्रिपेयर सच अ ह्यूज क्रिएशन। पहले स्टैंजा में हमारे पास पोइट ने कुड यूज़ किया है, लेकिन जब टाइगर की क्रिएशन और टाइगर की डिफरेंट क्वालिटीज़ बयान कर ली हैं 4 स्टैंजाज में, आखिरी स्टैंजा में फिर सेम पहला स्टैंजा रिपीट किया, लेकिन कुड की जगह पोइट ने डेयर लगाया है, लाइक यस इट इज़ क्रिएटेड, द क्रिएटर कैन डेयर टू क्रिएट सच अ ग्रेट क्रिएशन। नेक्स्ट हम इसके फॉर्म और स्ट्रक्चर की तरफ मूव करते हैं। सो द फॉर्म ऑफ दिस पोएम इज स्ट्रोकाइक टेट्रामीटर with catalexis at the end. Let's understand what is stochastic tetrameter and what is catalexis. So basically tetrameter line is a poetry line and trochaic foot is a pair of syllables, a stressed syllable followed by an unstressed syllable. Let's take the example of first line. We have tiger, tiger, burning bright. So in these 4 feet, if we discuss each foot, first one is a pair of syllable, a stressed syllable is followed by unstressed syllable, like tiger, tiger. Burn, burn is stressed and ink is unstressed. Burn, ink. But here is a concept that we have catalexis at the end of each line. फाइनल फुट में हमारे पास एक सिलेबल एब्सेंट है। इन द फॉरेस्ट ऑफ द नाइट, ब्राइट एंड नाइट आर सिंगल सिलेबल वर्ड्स। इसमें हमारे पास अनस्ट्रेस सिलेबल नहीं है, ओनली वी हैव स्ट्रेस सिलेबल्स। वाइल पहले जो 3 फुट हैं उनमें एक अनस्ट्रेस सिलेबल है और एक स्ट्रेस सिलेबल है। बेसिकली इस पोइम में हर लाइन के एंड पे हमारे पास कैटालेक्सिस है। कैटालेक्सिस क्या होता है? एब्सेंस ऑफ वन सिलेबल इन अ फुट। यू कैन सी दैट दिस पोइम कंसिस्ट ऑफ 6 क्वाट्रेन्स. A quatrain is a 4-line stanza. A quatrain, there are, you can see 6 quatrains basically. So this is the structure of the poem. Each quatrain contain 2 couplets. One couplet is consist of 2 lines that are rhyming to each other. So if we have 6 quatrains, a quatrain is 4-line stanza, so 6 multiplied by 4, it will be 24. So we have a 24 lines poems with 12 couplets and 6 stanzas. If you further explain the structure of the tiger lacks narrative movement. First stanza opens the central question, what immortal hand or eye could frame the fearful Smithri? Here the direct address to the creature becomes most obvious, but certainly the tiger cannot provide the lyrical one with the satisfactory answer, so the contemplation continues. The second stanza questions the tiger about where he was created. Third, about how the creator formed him. The fourth, about what tools were used. In the 5th stanza, Blake wonders how the creator reacted to the tiger and who created the creature. Finally, the 6th restates the central question while raising the states rather than merely question who could create the tiger. The speaker wonders who dares to create the tiger. And after that, we have the examples of figures of speech and allusions that are used in the poem The Tiger. First one is alliteration. If you have confusion in understanding the figures of speech, I have a separate video on figures of speech. I am putting the link in the description below. It would help you to understand that basically what are the figures of speech. So here we are having some examples of alliteration, metaphor, anaphora, allusion used in the tiger. So first of all we have alliteration, tiger, tiger burning bright. So we have the bold one here, letters T, T, B, B. So alliteration is the repetition of sounds in the line in the beginning of each letter.
So here we have the repetition of ta sound and ba sound. It would be alliteration. Next we have metaphor. Comparison of something to another thing. This is comparison of the tiger and his eyes to fire. Next we have anaphora. Repetition of what at the beginning of sentences or clauses. This is called anaphora. For example, in the poem we said what dread hand and what dread feet, what the hammer, what the chain. This is anaphora. Next we have allusion. There are two examples of allusions, immortal hand or eye. Here's a question that either God created it or Satan created it. What immortal hand or eye? So here could be two answers. This is allusion. Next we have distant deeps or skies. We questioned that tiger was created in distant deeps or in skies, hell or heaven. So it would be also an allusion. Next we have some symbols. The tiger is a symbol for evil or Satan. The lamb is a symbol for goodness, or we can also say innocence. Next we have distant deeps. These are hell and skies are heaven. Now we have themes and critical analysis of the poem. First theme is the existence of evil. The tiger presents a question that embodies the central theme: who created the tiger? Was it the kind and the loving God who made the lamb, or was it Saturn? पहले पहले हमारे पास क्वेश्चन है कि ईविल भी एग्जिस्ट करती है. इस थीम को हमने एक्सप्लेन किया है. क्वेश्चन है व्हाट इमॉर्टल हैंड और आई कुड फ्रेम द फेयरफुल स्मिथ ट्राई. विलियम ब्लेक यहाँ पे रियलाइज़ करते हैं कि ऑफ कोर्स गॉड हैज़ क्रिएटेड एवरीथिंग ऑन द अर्थ. हाउएवर वो यहाँ पे एक्सप्रेस ये कर रहे हैं कि अगर गॉड ने एक जेंटल लैम्प को बनाया है तो उसने इतनी टेरिफाइंग क्रिएचर यानी टाइगर को भी बनाया है. सो इट इज़ द प्रूफ दैट इफ़ देयर इज़ इनोसेंस देयर इज़ ऑल्सो ईविल. अगर अच्छाई है तो बुराई भी है. नेक्स्ट थीम है हमारे पास द एव एंड मिस्ट्री ऑफ क्रिएशन एंड द क्रिएटर. में विलियम ब्लेक ने द टाइगर के बारे में बताने से ज़्यादा उसके क्रिएटर के बारे में डिस्कस किया है. दैट हाउ द क्रिएटर क्रिएटेड दिस ब्यूटीफुल क्रिएशन एंड व्हाट अ काइंड ऑफ हैंड्स एंड स्ट्रेंथ द क्रिएटर हैव टू क्रिएट दिस स्ट्रॉन्ग क्रिएशन. Is the same creator created the tiger who created the lamb? So all these questions also glorify the creator of the tiger. So here is an interesting fact that the tiger is the sister poem to the lamb from the songs of innocence. And here we have the imagery and symbolism. First image that the poet created is on what wings dare he aspire. This seems to allude primarily to angels, in particular to the fallen angels. And here are some short and long questions that you have to prepare. First one is discuss Blake's use of auditory imagery in the poems and cite one example. Also we have the answer here. Next question is comment on Blake as a social critic. Next we have what were and are the effects of Blake's mode of publishing his poem with handcrafted colored engravings. And next we have 7 to 8 long questions that you have to prepare maybe for your exams or general understanding. If you like the video, don't forget to subscribe my channel. It would be a great support to me. Thank you so much.